अच्छा, आप लोगों ने कहाँ तक सुना था? मैं तो उसके बाद सेशन ले रही थी, आई डिडंट नो कि सेशन एंड हो गया, सेशन एंड हो गया था। कहाँ तक आप लोगों ने सुना था? बट वाज आई सीइंग, मैंने इतनी मतलब क्वेश्चन भी मैम पूछा कोई जी। है ही नहीं यहाँ पे। आ जाएंगे अभी। आप कब तक थे? आप थे पिछले सेशन में? लास्ट सेशन में थे नो आप? मैम वो नो मैम नो। ओके, लेट्स वेट। उनको जरा मैसेज कर दें ग्रुप में कि ज्वाइन कर लें अगेन ओके व्हाट्सएप मैम। ग्रुप में। अच्छा, आप लोगों ने कहाँ तक अफनान आगे हैं? अफनान, आपने कहाँ तक सुना था? यस मैम। कहाँ तक सुना था लास्ट में? मैं तो सेशन बोल रही थी अब तक एंड आई जस्ट गॉट टू नो कि सेशन एंड हो चुका है। तो कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? वो आपने जैसे ही वीडियो स्टार्ट कर ली थे जब हम लोग कहाँ से एंड हुआ वीडियो था? जैसे आप बिल्कुल स्टार्ट में। जी जी मैम, जैसे स्टार्ट ओह में वीडियो माय लगा गॉड, मैंने तो बहुत आगे तक इंसल्ट नहीं कहा, मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया। मैं तो बहुत आगे तक जो है वो करवा दिया। जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुई हम सब तो स्टार्ट से मुझे दोबारा करना पड़ेगा। चले, मैं दोबारा से लगाती हूँ। मैं बहुत मजे से सारा करवा रही थी आप लोगों को और वीडियो इवन एंड हो गई थी। तो चले, मैं दोबारा से प्ले कर रही हूँ। You may have noticed that when you see virtually any food advertisement, it never ends up looking the same as it does in real life. Even packaged अफनान frozen माइक बंद foods करो। feature photos that have hungry consumers when the product comes out of the microwave. But it's only sensible, if a little sneaky, for advertisers to make their products are pretty clever, and some are downright mind-blowing. Nothing says hot and fresh like lots of steam, if advertisers are to be believed. When someone in a commercial splits open a dinner roll, opens up a Big Mac carton, or microwaves popcorn, you can be sure that the product will be steaming like a tea kettle. Of course, we all know that commercials and that nobody is on set constantly cooking up steaming batches of products, but the secret behind those steaming pots is as simple as it is clever. Most food doesn't have a very high water content, so it stops steaming pretty quickly as it cools down. But cotton balls can hold plenty of water, and if soaked cotton balls are microwaved, they'll keep steaming for much longer than your average burger. Photographers will देखें strategically place देखें मेरी जो पिक्चर है, मैं भी आपसे पूछ रही थी कि उसके अंदर क्या कमी है। उसमें स्टीम की कमी है। उसमें ये स्टीमी इफेक्ट होता है तो इट वुड हैव शोन कि अच्छा चीज गरम गरम है। सो ये कह रहे हैं कि स्टीमी इफेक्ट कैसे लाते हैं। अब इस कॉफी के अंदर इन्होंने कॉटन बॉल्स को डालकर और फिर इसको गर्म किया है। तो क्या होता है कि वैसे तो स्टीम फौरन खत्म हो जाती है, लेकिन कॉटन बॉल्स की वजह से ये काफी देर तक स्टीम जो है प्रोड्यूस करता रहेगा। इसी them तरह behind बर्गर्स or around a product, enabling बर्गर्स और them to बाकी get that चीजों में भी perfect shot बीच में ये कॉटन बॉल्स रखते हैं और फिर उसके बाद इसको माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं। तो उससे शॉट जब देते हैं तो काफी देर तक स्टीम उठती रहती है। that gives that product a just cooked appearance. Mashed potatoes are the unsung heroes of advertising photography. They're easy to work with and model, keep for a long time, and won't melt or run under hot lights. Over the years, advertisers have found a number of ways to use mashed potatoes to make other foods look better on camera. They can be used to add volume to meat products like roasts and whole chickens, simply by injecting them into the desired area.
They're also baked into pies to give the filling a sturdy consistency that won't run when a piece is cut. But by far their most popular use in advertising photography is as a stand-in for ice. तो ये जो आइसक्रीम आपको नजर आती है ये आइसक्रीम नहीं होती है, बेसिकली मैश पोटैटो होता है। आइसक्रीम तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी तो इसलिए वो उसकी फोटोग्राफी इतनी देर तक कर नहीं सकते। तो ये मैश पोटैटोज जो हैं इसमें भी यूज होता है। इसी मैश पोटैटो को ये यूज करते हैं, चिकन के अंदर स्टफ करते हैं जिससे आपको चिकन बड़ा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग नजर आता है और टेम्पटिंग लगता है। सो यही मैश पोटैटोज ये लोग डिफरेंट इस तरह से आइसक्रीम के जो है लेयर्स बनाने में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। ये जो मिल्क आपको है, Milk. It tends to look thin and not quite wide enough on camera, and its most typical use in advertising, as a co-star in cereal ads, presents even more issues. Cereal has to look crunchy and fresh in ads, and as we all know, it doesn't take most cereals very long to become soggy. That is why the milk you see in these ads isn't milk at all, it's glue. Regular Elmer's glue retains its stark white appearance on camera, and it's so thick that no cereal is heavy enough to sink inside it. The cereal bowls you see in these ads are modified to be only a couple of inches deep. A thick layer of glue is poured in, and a sprinkling of cereal is laid over the top. Photographers can shoot for hours, and the cereal will stay fresh and dry while the phony milk never loses its milkiness. सो क्या होता है कि जैसे ही आप दूध के अंदर सीरियल्स डालेंगे तो वो सोक हो जाते हैं और वो इस तरह फ्रेश नहीं नजर आते। तो ये उसकी जगह ग्लू यूज करते हैं, वाइट ग्लू, उसके ऊपर सीरियल्स डाल देते हैं, ऊपर ऐसा फ्रेश लुक देता है, आपको टेम्पटिंग लुक देता है। When you see an advertisement for a restaurant or a steakhouse, the steaks always appear grilled to perfection. You can tell because they're pink and juicy on the inside, with distinct grill marks on the outside, the marks of an excellent steak. They may not always get it right in the restaurant, but advertisers make sure that what you see on TV is as appetizing as possible. And they do it in one of the least appetizing ways imaginable. The steaks used in these ads are not even cooked on a grill at all. It's too hard to achieve that perfect pinkness that way. Instead, they're cooked in an oven or on a flat grill, and then the grill marks are painted on with shoe or boot polish. That wouldn't exactly be a tasty steak, but it sure looks good on camera. स्टेक को कुक ही नहीं करते, कुक करेंगे तो वो एक तो श्रिंक भी हो जाता है और अंदर से ब्राउन ब्राउन हो जाता है। अब उनको तो अंदर से दिखाने ना जैसे बहुत सॉफ्ट सा है और पिंक सा है, तो क्या करते हैं ऊपर शू पॉलिश से इस तरह के निशान मारते हैं। देखिए आप ये वाला स्टेक है, ये जो मैंने पिक्चर दी हुई है, ये देखिए ये वाला बर्गर, ये स्टेक है। इस स्टेक में और स्टेक में देखिए कितना डिफरेंस है। अब मैं तो बेसिकली वो वाली फोटोग्राफी नहीं कर सकती थी ना कि मैं इसमें उस तरह से करूँ। देखिए असल अब मैं एक और चीज़ नोट कर रही हूँ, बहुत सारे पेशावर में देखती हूँ बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं आजकल, वो डालें जी वी हैव बिकम फूड फोटोग्राफर, और रेस्टोरेंट्स के लिए जाकर उन्होंने फोटोग्राफी शुरू की है। जब वो पिक्चर डालती है वो इसी तरह से मेरी तरह से डेकोरेटेड होती है, बट दिस नॉट एक्चुअल फोटोग्राफी। ये एक्चुअल फूड फोटोग्राफी नहीं है, हर एक चीज़ की फोटोग्राफी डिफरेंट तरह से होती है। अब देखें आप इसमें ये सैलेड की लेयर नजर नहीं आ रही, इसमें चीज़ की लेयर नजर नहीं आ रही, इसमें टोमेटो की लेयर नजर नहीं आ रही। जब तक आपकी ये लेयर्स नजर नहीं आती, इट इज नॉट फूड फोटोग्राफी। सो लेयर्स किस तरह बनाते हैं मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी, ये लोग किस तरीके से लेयर्स बनाते हैं। तो आपका एक एक लेयर, आपका ये जो बन भी है इससे जबरदस्त किस्म का बड़ा सा बन नजर आना चाहिए, तो फिर वो फूड फोटोग्राफी बनती है। मैंने फिर भी थोड़ी सी कोशिश की थी कि मैंने ये जो स्टिक्स हैं मेरे पास पड़ी थी बारबेक्यू स्टिक, मैंने इसके ऊपर इनके जो फिश फ्राइज थे वो लगा दिए, और कुछ चिकन की बोटी जो थी पीसेस थे ये मैंने इसके ऊपर दूसरी पर लगा दिए। अब देखिए इस नाचोस के अंदर आपको नहीं नजर आ रही वेजिटेबल्स, आपको चिकन नहीं नजर आ रहा है, इसमें आपको मसाला नहीं नजर आ रहा। दिस इज नॉट फूड फोटोग्राफी जब तक कि क्लियर एक एक चीज नजर ना आए। देखिए ये फ्रूट है, ये फ्रूट है तो ये फ्रूट का एक एक स्लाइस क्लियरली नजर आना चाहिए था। वो जो आपको एक एक क्लियरली विजुअलाइज होता है ना, जो वो आपको टेम्पटिंग लगता है, वो आपकी भूख सबसे ज्यादा बढ़ाता है। ओके सो लेट अब ये देखिए जरा, ये इसके अंदर इस तरह जी कुछ कह रहे हैं? एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम वो अभी दूसरा क्लास शुरू हो गया है, आपकी दूसरी क्लास शुरू हो गई है? मैनेजमेंट का। अच्छा चलिए ठीक है। जी मैम। ठीक है, फिर ऐसा करती हूँ मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेती हूँ, आप लोग फिर इसकी रिकॉर्डिंग सुन लें, क्योंकि वो शुरू में डिस्ट्रैक्शन हो गई तो ये मुझे थोड़ी सी इसको कंप्लीट करना है। 5 मिनट हो जाएंगे मुझे। जी मैम। आप लोग क्विट कर दें, मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग में आपको अपलोड कर देती हूँ। फिर आप ये 5 मिनट्स का फिर आगे का और सुन लेना मैम। जी। ओके मैम ठीक है आप एलएमएस पे अपलोड करेंगे ये वीडियो कर? जी मैं इसको एलएमएस पे अपलोड कर देती हूँ, अभी कर देती हूँ।
ठीक है, इसको इसको मैं फिर 5 मिनट्स का कंप्लीट करके फिर अपलोड कर देती हूँ। अच्छा तो अच्छा तो मैं आपको ये बता रही थी, अब ये जैसे लेमन है, ये कितना क्लियर एक इमेज आ रहा है इन लेमन का। हाँ बिल्कुल, जितना क्लियर इमेज होगा, जितना स्ट्रॉन्ग इमेज होगा, उतना ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है। Whipped cream is as difficult to work with as ice cream if you're trying to use it in an advertising shoot. It doesn't have a consistent thickness, tends to get runny, and will begin melting under hot lights in mere seconds. Fortunately for photographers, there's a common product that looks identical to whipped cream but doesn't have these problems. It's shaving cream. And every ad you've ever seen featuring a milkshake, parfait, or slice of pie with a dollop of whipped cream on top didn't actually use whipped cream at all. Shaving cream holds up for much longer, won't melt, and is easy to sculpt and shape in whatever way the photographer wishes. Just like with mashed potatoes and whipped cream, it's impossible for your eye to tell the difference. If you're wondering if some unlucky crew member on a commercial shoot ever picked up the wrong drink by accident and got a mouthful of Barbasol, well, that's never been documented. But the law of averages and Murphy's Law both dictate that yes, it almost certainly has. तो ये जो आपको नजर आ रही होती है ना क्रीम, इतनी प्यारी सी और इतनी प्यारी प्यारी आपकी कॉफी के ऊपर शेप्स बनी होती है क्रीम खा रही है, बेसिकली व्हिप्ड क्रीम होती है। वो सॉरी, व्हिप्ड क्रीम नहीं होती, शेविंग क्रीम होती है, क्योंकि शेविंग क्रीम ज्यादा देर तक रहती है और ज्यादा डिजाइन बना सकते हैं शेविंग क्रीम से। Distributors of fresh fruit have their own tricks for making the product look more appealing in person. A lot of the fruit you find in grocery stores actually has a very thin wax coating to make it appear more shiny. But this isn't quite enough for TV cameras, so photographers have discovered another trick to make fruit really pop in advertisements. If you're a little put off by that wax coating, you can at least keep in mind that wax is edible and won't harm you. Spray deodorant, on the other hand, should never come anywhere near food, unless it's starring in a commercial. Photographers spray down apples, grapes, pears, and practically anything else that has a skin with a liberal coating of spray deodorant to give them that तो ये क्या करते हैं, इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं जो डिओडोरेंट नहीं होते आपके बॉडी स्प्रे वगैरह, ताकि ये मोर शाइनी नजर आए। ultra shiny look that we associate with being natural, even though it is anything but. One thing that is difficult to convey in photography is consistency, and this presents a big problem if you have to photograph sauces. At their correct consistency, sauces tend to look thin and watered down on camera, and can also appear dull or lacking in color. Some sauces can also separate over the course of a long shoot, but photographers have found a simple addition that solves all of these problems at once. It's wax. Simple ordinary wax with some coloring additives. Red wax, for example, can make the color of a red sauce pop while making it appear to have the desired robust consistency on camera. Different colors can be used to tweak a sauce's on-camera appearance until it's तो ये जो जितनी भी सॉस वाली लुक आप लोगों ने देनी होती है ना, जो टेम्पटिंग सा यूं गिर रहा है वन बाय वन, तो ये जो टेम्पटिंग लुक आती है ना, ये बेसिकली आपकी आती है वैक्स से। ये लोग जो मोमबत्ती नहीं होती, मोमबत्ती को पिघलाकर उससे देते हैं। वरना आप अपने एक सॉस को गिराए ना, अपने चॉकलेट को या न्यूटेला को, इतना जबरदस्त वे से शेप बना के हनी की तरह नीचे नहीं आएगा, लेकिन इनका बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। वो इसलिए लगता है कि इन लोगों ने इसको वैक्स को मेल्ट किया होता है। to mashed potatoes as the MVP of ad photography. Whenever you see a shot of a slice of layer cake with perfectly even distribution of cake and frosting, you can bet that there are a couple of extra layers. Photographers will insert pieces of cardboard in between the layers of the cake, then pipe the frosting onto the cardboard. This helps ensure that there are no crumbs on the frosting, which is हमारे unavoidable. केक इस तरह लगते हैं। मैं हमेशा देखती थी मेरे केक में ना, कोई जब बनाती थी लेयर्स वाले, तो कुछ भी परफेक्ट लेयर्स नहीं आ रही थी, समझ नहीं आता था इनकी लेयर्स कैसे आ जाती when हैं। simply cutting a ये लोग असल में कार्डबोर्ड लगाते हैं बीच में, कार्डबोर्ड को काट के piece of लेयर्स cake, आती हैं। and that the layers of cake and frosting look perfectly uniform. Yeah, they Cardboard look is also uniform. used to make sure that every fast food burger you see in an ad looks perfect. Condiments इवन यही कार्डबोर्ड इन बर्गर्स में यूज होता है, इनकी लेयर्स को सेपरेटली दिखाने के लिए। like lettuce, tomatoes, and pickles are always positioned precisely in these shots, and this is done by slipping a layer of cardboard in on top of the burger patty. The fixings are then meticulously positioned for the camera and held in place by pins. You might complain that your fast food burgers never look like the ones in the ads, but you really हमारे फास्ट फूड बर्गर इसी तरीके, इसी वजह से ये एडवर्टाइजमेंट वाले नहीं लगते। देखिए इन्होंने बीच में कार्डबोर्ड रखा है, फिर उसके ऊपर चीज डाला है, एक एक लेयर नजर आ रही है। wouldn't want the one from the ad, unless you were looking for a mouthful of packing materials.
पैकिंग मटेरियल्स बीच में डाले हुए उन्होंने। Anyone who has ever tried to cook a perfect chicken or turkey knows how difficult it is. In advertisements, whole birds always look plump, juicy, and golden brown. And as you may have guessed, it's not because advertisers hire world-class chefs to cook up amazingly photogenic birds. In fact, the whole birds you see in advertisements would not be delicious. They wouldn't even be edible. The birds used for these photo shoots are barely cooked, just enough to make them more sturdy. Then they're typically stuffed with paper towels to puff them up before being sewn shut. Areas that still look a little saggy can be pumped up with those mashed potatoes, and then the entire bird is painted by an airbrush artist to achieve that perfect golden brown tone. It makes for a delectable looking bird, but this technique probably won't work so well for your next कहते हैं ये चिकन तो ये बिल्कुल सिरे से कुक ही नहीं करते, इसके साइड पर अंदर शॉपर भरते हैं, कागज भरते हैं, आगे मैश पोटैटोस लगा देते हैं, पूरा पेंट कर देते हैं और उसको रख देते हैं। हमें बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन ये इसको अब इस वाली को देख के बिल्कुल पानी नहीं आ रहा होगा। Thanksgiving dinner. A fluffy stack of pancakes with warm maple syrup is a great way to start the morning, and advertisers know that this image will get your stomach rumbling. The problem with getting this on camera is that almost all pancakes absorb अब वो कह रहे हैं कि हमने ऐसी लुक देनी है पैनकेक की भी कि आपको भूख लग जाए डिश के साथ। अब हमारे जो होते हैं उसमें पिक्चर्स में भूख नहीं लग क्रिएट हो रही होती। syrup pretty quickly, making it tough to get across how rich and thick your syrup is. To avoid this, photographers will spray down each pancake with a coating of fabric protector like Scotchgard, keeping them from being too absorbent. But sometimes even this isn't enough. Regular syrup can heat up and become runny under lights, and doesn't always photograph well. This is why many of these types of advertisements don't use real syrup. That's 10W30 motor oil getting poured all over those flapjacks. Sure, they were already ruined by the Scotchgard, but somehow that just doesn't seem right. ये पता है क्या करते हैं, पहले तो क्या होता है, जैसे ही आप इसके ऊपर सिरप डालेंगे तो इसे सोक कर लेता है, तो सबसे पहले ये स्प्रे करते हैं एंटी ऑब्जर्वेंट, जिसकी वजह से सोक ना करे, वो जो कपड़ों पे किया जाता है, जो कपड़े आपके फिर पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते। फिर क्या करते हैं, ये एक्चुअल सिरप हनी नहीं डालते, ये इसकी जगह डालते हैं जो आपका मोटर ऑयल होता है गाड़ियों का, और वो इस तरह से मतलब थिक होता है, जो कि ऑब्जॉर्ब नहीं होता है, इसके नीचे चला जाता है। So this is it by my side. If you want to go for your class, you are free to go. Take screenshot and do share the screenshot of your attendance in your group. And by my side, take care. Allah Hafiz. Inshallah, we'll continue tomorrow. Okay, ma'am. Allah Hafiz.